Next one is significant digit. Significant digit. Significant digits means क्या होता है? Or we can say significant figures. Both are same. Significant figures. Significant digit or significant figures means the digits used to express a number. The digit used to express a number are called significant figures or significant digit. Significant figures or digit, right? जैसे 2 है, 2 को आप सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट से एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज 2, राइट? 4/3 है, अब आपने 1.33 लिख रखा है, तो उसको आप किससे 1.33, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने यूज हो रहे हैं? 3, ठीक है? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स टू ऑब्टेन rules to obtain rules to obtain significant figures. मीन्स कोई भी नंबर आपको गिवन है, उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. सपोज आपको दिया हुआ है 972013, तो आपको उसमें पूछा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. उसको ऑब्टेन करने के रूल्स हैं. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन. फर्स्ट इज ऑल non-zero digit do count. मीन्स जितने भी नंबर्स में नॉन जीरो डिजिट है उन सबको आपको काउंट करना है. एग्जाम्पल 24, तो 24 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 2 and 4, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.56, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 3. मैंने क्या रूल बताया? सारे नॉन जीरो डिजिट है, सबको काउंट करना है. तो 2 इज नॉन जीरो, 4 इज नॉन जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2. 3.56 तो 3, ठीक है. सेकेंड रूल इज लीडिंग जीरो डू नॉट काउंट. लीडिंग जीरो का मतलब क्या है? किसी भी नंबर के सामने जो जीरो है उनको काउंट नहीं करना है, ठीक है? जीरो इन फ्रंट ऑफ नंबर्स. लीडिंग जीरो मीन्स जीरो इन फ्रंट ऑफ नंबर्स, राइट? उनको आपको काउंट नहीं करना है. तो सपोज एग्जाम्पल क्या है आपका? 0.0025, तो इसमें क्या है? आपके नंबर 25 नंबर के सामने कितने जीरोस है? 2. तो इसको हम काउंट, वी विल नॉट काउंट these 2 zeros because the rule says that leading zero do not count to obtain significant figures. So in this number कितने significant digits आएंगे? 2, ठीक है? ये रूल याद रखने हैं टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. मीन्स एग्जाम में क्या हो सकता है? आपको 2-3 नंबर्स दे दिए जाएंगे, टेबल दे दी जाएगी और उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, कितने हैं, ठीक है? तो ये सारे रूल्स के थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाएंगे. हम एक टेबल लेंगे, जैसे एग्जाम में आएगा ऐसा हम एक टेबल लेंगे और आपसे ही डिस्कस करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट रूल इज कैप्टिव जीरो डू काउंट. कैप्टिव जीरो मीन्स जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स. कैप्टिव जीरो का मतलब क्या है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स.
ठीक है, मीन्स अगर किसी नंबर के बीच में, एग्जांपल देखो, नंबर के बीच में कोई जीरो आ रहा है तो मीन्स इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर आप 152 लिखोगे तो वो क्या होगा 152, और यहाँ 1502 लिख दिया तो वो क्या हो गया 1502। So captive zero do count, means we have to count captive zero to find out the significant figures. Clear? So for this significant figures are 4, 1, 5, 0, 2. Next example 1.008. तो significant figures क्या है 4, 1, 2 zeros and single number 1. So 4 significant digits are there. Clear? Fourth one is trailing zero. Trailing zero. Trailing zero. Do count if the number contain a decimal. अगर आपका नंबर में डेसिमल है, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होगी। ओके ओके, इफ नंबर हैविंग डेसिमल देन वी विल काउंट ट्रेलिंग जीरो, अदरवाइज वी डू नॉट काउंट दिस ट्रेलिंग जीरो। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ट्रेलिंग जीरो क्या है, जीरो एट द एंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, आप सपोज एग्जांपल है 100, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 1, ओनली 1, 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इफ 2306.0 is equal to, means if number contain a decimal then we will count 0 at the end of number. Okay, so in this number significant figures are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, जो फर्स्ट नंबर था आपका 210, क्या नंबर था आपका, what was the number, 2015120. in this significant digit are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because it does not contain decimal, so we will not count trailing zero. ओके, सारे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हम वेरियस नंबर की टेबल ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। सपोज नंबर्स एक टेबल बनाते हैं, ये आपके नंबर्स हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे उस पर करस्पॉन्डिंग नंबर का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है 58। so this number does not contain trailing zero, leading zero and captive zero. ठीक है, this is a simple number. so कितने कितने डिजिट होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे इस नंबर में 2। सेकेंड is 604. so in this figure we will, in this number we will count captive zero according to the rule number 3. so significant figures are 3. okay, next number is 1008. 4. Very good. Next is 95080. Yes. So we will count captive zero. We do not count this trailing zero because this number and not contain this number does not contain decimal. Okay. Next is 1.0. Because yes, after decimal we have to consider this trailing zero, right? Next is
Yes, ma'am. 0.0.80. According to the rule number 2, leading zero do not count. तो लीडिंग जीरो क्या है? इन फ्रंट ऑफ द नंबर्स, इसको हम काउंट नहीं करेंगे. Yes. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरो we will count if number contains decimal. So in this number decimal is here, so we will count this zero in the significant digit. So here significant figures are